Right, so welcome to the fourth lecture. Last time, what did we do? क्या कर रहे थे? RMS, okay, that was part of some bigger plan, right? What was it? Getting to know signals, right? Yeah, so that was classification of signals, but then we went further, or at least we decided to go further to the next level, which was um, to look at signal operations. Okay. So when signals pass through systems, the systems operate on the signals. Now the kind of operations they can do are varied, almost infinitely optimistic, right? So what we do now is look at some very common operations that happen to signals, right? Now real processes, real systems do a combination of these. ऐसा नहीं है कि एक signal system is there which is just providing a shift. There is a system which just provides a shift, but overall when you need some operation done, shifting will be just one of the operations that you need done, right? So what we are looking at is the basic elements of the operations, which common operations are there, right? So we have to be comfortable with those, and as I said last time, we will look at operations, we will look at some common signal models, and we will also practice a little bit, yeah. So I've described this. Last time we first the easiest one we look at is time shifting. Yeah. So in time shifting, what are we doing? We are either delaying the signal or advancing it, right? With respect to its original version. So here on the top you have a signal. It starts at some particular time, and at time 0 it's less than its half value or less than the peak, and then it goes. Now if you delay it t minus t, it goes to the right, yeah. And if you add t plus t, here the assumption is that capital T is positive, yeah. अगर आप नेगेटिव कैपिटल T डाल दें यहाँ पे तो वो दोनों उलट हो जाएंगे. So now right shifted occurs later than the original, left shifted occurs earlier than the original. And how do we, it's very easy to show that it's actually t minus 2. So for example, if the original is xt, what is its value? Let's say at x2 its value is a, yeah. x3 its value is b, x4 its value is c. This is a simplified version, yeah. So what would happen to xt minus 2? So सर असल में ऐसे कोई सिस्टम होता है जो एक्चुअली इनपुट से पहले आउटपुट रियलिस्टिकली मेक सेंस नहीं करता कि उसको इनपुट ही नहीं मिला तो पहले से आउटपुट देता है. Yes, we will study causal and non-causal systems, right? And there are non-causal systems, but we will see that those systems only work offline. Yeah? They cannot work online. So yes, ऑफलाइन yeah, हो सकता है ना offline, या नहीं हो सकता. एक दफा डेटा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है. Now you want to give output at the start. Live नहीं. You take a future value. पहले से डाटा भरा होता है. Yeah, that's offline. तो उसमें भी जो इनपुट है पहले ही दे रहा हाँ वो टेक्निकल नहीं करते हैं. Right. So what you want to do is basically in the offline mode, you are giving output for, so you get 10 values, right? And now you are giving output at this point. You can use next 6 values, average them and give the output. So you use future values to process each particular output, right? आपने भी 10 output देने हैं. उन 10 in each of those outputs you can use current value, past value and future value, right, from your reference point. But again, physically it's not possible, right? So we know that we will come to that, yeah. So in this case, what we are looking at is delaying or advancing the signal. So for example, let's say there is a system where you have this data, let's say it's recorded. Okay. Now if it is recorded, then a system can do both operations.
कर सकता है because the data is already recorded, so it can advance it or delay it. But if the data is real time, then of course advance is not possible. Definitely. ठीक? So yes, there are systems, but they are offline, and we will come to that. Good. So let's look at this. X2 is A, X3 is B, X4 is C. Then you have the right shifted one. You notice that X right shifted 4 is A now, right? 5 is B and 6 is C. And you notice that the new one is XR, 4 is original X2. Yes? So this leads you, अगर आप इसका general formula लिखें तो वो इस तरह बनेगा. So the right shift is actually T minus 2. Yeah? If you just look at it. So ये थोड़ा सा idea देने के लिए, just to bring home this point, that it's not magical that we just take T minus 2 or T minus T here. It makes sense that the samples are shifted. It's very simple and straightforward. So it's shifted by T units. What about advance? You repeat the same idea and you will see that the left shifted or the advanced signal is T plus 2. Why? Because now जो भी original में whatever was happening at X2 is now happening at X0. What was happening at X3 is now happening at X1, meaning it is happening earlier. T हमारा वो है ना time का इसमें, right? So then what we need here basically is an understanding that okay, as long as T is positive, T plus T will always lead to things happening earlier than original. कितना shift आएगा? Capital T का, right? In the example, what is capital T? 2, right? So you can have various values, of course, in the general case. So that is simple and straightforward. Let's try here. Paper pencil है आप पास. So let's पहले तो एक rough सा plot करें इसका, and then also try to write a function and plot the delayed one. So write the function of the delayed signal. क्या मांगा गया? Write the 1 second delayed version of this. So assume T is in seconds. Yeah. We want 1 second delayed version of this. लिखे था. बताएं क्या equation बताएंगे. क्या plot भी करेंगे. The ability to do this thing will be very useful in this course. आगे problems complicate होते जाएंगे, पर most of them will start with this. If you're not comfortable with writing the operations, writing the signals or plotting them, rough plot करना होता है. आप नहीं कह रहे exact E2 calculator लेके वो शुरू कर दें, right? आपको पता है कि exponential decay, exponential growth, इनकी क्या function, किस तरह लगते हैं. But if you're not able to do these things, this first step, क्योंकि जो अगले steps हैं ना वो आपके लिए hard हो जाते हैं. इसलिए it's good that you try on your own. E square क्या बना जी? ये लिखा है function E power square होता है. e power minus 2t है. तो T minus 1 ले लेंगे इसलिए कि हाँ, आगे डिले है ना. ठीक है. So what you will do is you will have in place of xt you will have x minus 1. t minus 1. So लिखवाएं equals what? xt minus 1 because you want a delay, yeah, equals क्या होगा? piece wise है. So what is that? T की जगह उसकी नई वैल्यू रहेगी. Okay, लिखवा दे e minus 2 E minus 1. yeah, bracket में भूलना नहीं. Yes, okay. Anything else? So T plus 2 यहाँ क्या होगा? 0 सर 0 तो 0 नहीं रहेगा.
बताए ना माइनस 2t प्लस 2 हाँ हाँ सही है That's overthinking की बात करते हैं. Zero हाँ. की जगह. ओ जीरो इधर. की जगह सॉरी Zero की जगह. Because there is no t, so t minus 1 से replace कैसे करेंगे? Is this complete now? Something missing? सर अभी भी कोई मसला की Right? नहीं, इसमें is this not complete? अच्छा हाँ Something missing. सर वो देंगे ना पीरियड देंगे कुछ तो Yes. Intervals. क्या होगा? जीरो नहीं होगा So, any other thoughts? इसमें तो t greater equal to 0 है. हाँ इसमें t इधर क्या होगा? 1 t greater equal to 1. कैसे निकाला आपने? Yes. Now many of you today forgot this, and unfortunately, even in the final, many of you will forget it. That tells me कि आप लोग घर जाके ना देखते नहीं है दोबारा. अभी तारों में और फाइनल में भी आप करेंगे, मिड में भी करेंगे. It's just I don't get it. T has to be replaced everywhere in the function, right? जहाँ जहाँ वो R है जाहिर है, जहाँ I नहीं था उसको तो नहीं चाहिए. Now it doesn't just appear in this the definition or on the left, it also appears in the definition of the interval, which is part of a piecewise function. इसके बगैर piecewise function is not complete, yeah? So you have to replace the T in the interval also. क्या बनेगा ये? सर एक आसान तरीका ये T है minus 1 greater than 0 and T minus 1 less than 0, and then you can simplify it to T greater or equal to 1 and T less than 1. Yeah? When now you plot it, you will see that the function has shifted to the Right. left. सर ये जो मेन होंगे चेंज के इसको कंसेप्ट क्या किया? p को t minus 1 किया रेंज Sorry, मुझे समझ नहीं. इसकी बात कर रेंज इसकी? This one? The whole thing is changing. So we are changing, we're shifting the independent parameter, delaying it, right? So I've already shown what a delay looks like. This is the formulation for a delay. You replace t by t minus something, positive number. Yeah. So I've explained this here. This shows you why minus t minus something is a delay. Yeah. So we have looked at that, and here we just gave you a task to now apply this idea here. And if you are to mathematically replace xt by xt minus 1, right? So if this is xt, then what is xt minus 1? Of course, that function will have to replace t by t minus 1 everywhere in xt. Yes? So you can't skip the definition of the interval in there. So plot हो गया किसी से? प्लॉट ही करना था हाँ कर नहीं पाया. सर शेप क्या होती थी और Exponential decay की shape क्या होगी? So notice this thing. Why did it come here now? Because of that change. T minus 1 greater or equal to 0 means t greater or equal to 1. Yeah. So the shift in the function that was originally happening at 0, from 0 it became an exponential function, is now happening at 1. There is a delay happening later. Yes, by 1 unit. Okay. अब वो exponential decay और quadratic function, linear, ये चीज़ें तो draw करनी आनी चाहिए रास्ते में. Yes, these help a lot. Okay. Time scaling. आजकल इसकी most common application है किसी आप लोग बहुत use करते हैं. So time scaling is what? You can think about it and then tell me. Yeah. So this is the original signal. In one case you want to compress it. Yes. In the other you want to expand it. The total content does not change. Okay?
क्या है आजकल व्हाट्सएप में टाइम व्हाट्सएप में आप सारे सुनते हैं वॉइस मैसेज ट्रिपल करके 2x 2x है ज़्यादा नहीं 1.5 मैं तो सुना किसी को करते हुए आई वाज लाइक ओके ये बोल ऐसे रहा है it's something you guys do I don't but notice that's which one you do कौन सा करते हैं आप Play it faster. फास्ट कर लेते तो second one yes but does the content change No. if the person is saying I'll be there today तेज नहीं आता पर थोड़ा तेज क्या right So कभी कभी वो बंदे का एक्सेंट इस तरह होता है तेज आवाज में कुछ और लफ्ज निकल आते हैं। होता वो तो है थोड़ा माइंड का मसला समझने का Mind एक्चुअली का। क्लेम बात वो वही है बात वही है, I'm बात not वही। saying कि I will not come जिस तरह हम रिसीव करते हैं वो फिर डिफरेंट होता है। थोड़ी सी ब्रेन को प्रोसेस करने में शायद डिफिकल्टी थोड़ी सी हो जाती सो when you played slower which you don't of course but if you did that will be stretching but from that example what I want to say is or what want to bring home is that the content does not change right it's just expanded or contracted yeah so in that sense this is compression and this is expansion so this is the second पहला क्या था time shifting why time because we are messing with the x-axis okay usually we say it's time yeah so this is time scaling yeah you scale along the time axis and to show what it looks like just imagine that if you had something like this and you wanted to expand it just write out some of the values and it become very clear that the expanded one is t by 2 it's a bit counterintuitive often you would think the expanded one should be 2t yeah but it's actually t by 2 okay so one is the contracted one that is 2t at whatever factor you want to use right so there is t by a that is an expansion of a by factor a t at is a compression by factor a why do we need a greater than 1 अगर लेस देन हो जाए तो वो तो वही 80 कोई बड़ा 1 से कोई वो हो जाएगी क्या कहते हैं let's say in the upper one a is less than 1 then what is xt by a वो ए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि एक फ्रैक्शन बन जाता है समझे प्लान xt by a क्या हो जाएगा if a is less than 1 तो छोटा अभी I am saying it's expansion छोटा हो वो compression बन जाएगा हाँ उल्लट हो जाएगा ना फिर it will become compression right so of course we don't want हम formula जो बताना चाह रहे we just want to say so you can actually have this in another way you can say xat is compression if a is greater than 1 and expansion is if a is less than 1 ये भी कह सकते हैं right so there are many ways of putting it mathematically but if you write it like this then you have to make sure that you also mention that a is greater than 1 yeah otherwise वो switch हो जाएंगे compression and expansion right so we did time shifting time scaling yeah let's see what's next okay let's practice this one a bit so the solution here already it's not much to do but notice this you had xt you wanted to compress it by a factor of 3 compression so क्या होगा multiply divide multiply yeah so 3t now notice everywhere the t has to be replaced by 3t in the definitions and in the definition of the intervals without that you won't get this new one yeah तो अभी आप लोग जल्दी से दोनों प्लॉट करें ओरिजिनल और उसके नीचे कंप्रेस्ड
लंबा एक बार मॉडल ये आर्ट की क्लास नहीं है बाय सर मैं रफ सोच सर्च दिया कर लूँगा तो इसके मैथमेटिकली इधर कुछ नहीं कर रहा Yes. तो -1.5 to 0 is a constant too. That's good. And then it's exponentially dropping till तो इस तरह बनेगा 3. क्या बनाए बोल किसका रहे लगा बना लीजिए बना में सही है ये ठीक है अब इसका चाहिए वो बना दो इसका कंप्रेस्ड वर्जन बना दो हो गया तो कंप्रेस्ड वर्जन बस वर्जन ओवन बनाएगा व्हाट्सएप बस इसी को मैं इसकी वैल्यू चेंज कर करो ना यार वैल्यू चेंज करो तो होगी चीज आपका सबसे क्रिएटिव वाला लगा ये मैं अपनी माइंड पे सर वही कह रहा था ठीक है और क्योंकि आर्ट की क्लास में ये अच्छा ये तो ओके बॉयज ब्रश करने के लिए भी लगा दी हुई चीज है ब्रश के लिए कुछ है 1.5 से 0 तक लीनियरली ग्रो कर रहा है इसको वो थिकनेस हो जाएगा ये वहाँ क्या मोटी है हो जाएगी इज इट अ कांस्टेंट इन दैट मींस या लीनियर ग्रो वैल्यू क्या है -1.5 से 0 तो टू कांस्टेंट है या ग्रोइंग चीज है कांस्टेंट है तो यहाँ से यहाँ पे लाइन नहीं होगी सीधी है हाँ ऐसे होगा ना हाँ हाँ ठीक है ये कंप्रेस कर रहे हैं यहाँ ठीक है तो ये क्या है यहाँ पे क्या है तो ये कंप्रेस आएगा ठीक है तो यहाँ पे ठीक है ठीक है अब आप इसी को प्लॉट में दोबारा देखेंगे ब्रश ओरिजिनल है एक्चुअली वो कंप्रेस ना बहुत है ये ना चलो अच्छा ये तो ठीक है ये कैसे है ठीक है आई जस्ट वांट अंडरस्टैंडिंग हाँ सही है अगर कुछ उसी को सॉल्यूशन उसी को गलत बना निकालना देना। तो मसला नहीं but we should always be able to look at it again and compare to the actual thing and find if something is wrong अगर वो नहीं हो रहा ना तो फिर हम किसी बनाओ ठीक है right अब लेते हैं ठीक है ये समझ आ गई ये आपने पार्ट ड्रॉ किया फ्रॉम द वन फर्स्ट तक जाएगा करेक्ट तो वो रेंजेस देखो ये पार्ट्स तो रेंज वन तक यहाँ तक ये ब्रश कौन का सा? देखो ना रेंज एक्सपोनेंशियल कहाँ है ब्रश की क्या कहाँ है से कहाँ पे एक्सपोनेंशियल ओह सॉरी थ्री तक है थ्री कहाँ या है वो नीचे आपसे या फिर आपके इस प्लॉट में इसका यहाँ है या इसकी लिखो मेरा स्किल शो इधर ठीक है अभी ये 0 से 3 तक एक्सपोनेंशियल डिके चल रहे हैं या ग्रोथ भी हो रही है हाँ, बताओ। क्यों? क्या टाइम स्केल है इसी का t is between 0 and 3 e minus from positive value e की negative power आ गया right हाँ। तो वो into value so अब आपने ये यहाँ से ऑनवर्ड ग्रोथ दिखा दिया अभी कहाँ से अब वैल्यू काट दी गई तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये है कि you should be able to argue with ब्रश का yourself वन तक ही है roughly you should always be able to argue with yourself कि भाई ये मैंने किया है लेकिन इसकी मेरे पास स्पेसिफिकेशन नहीं if you take away all of that जो बचेगा वो एक्सपोनेंशियल ड्रॉप है फिर जीरो है तो फर्स्ट में तो ये कंप्रेस कर रहे हैं ओके सर बन हो गया बन उसी पर बनाया है लेकिन बन बन गया कंप्रेस्ड है नजर आ रहा है कंप्रेशन है यस सर Acha, can somebody tell me from the equations here that you can already see the compression happening? Yes, sir. कहाँ? Zero. इंटरवल Yes, see,
whatever was gonna happen in this range of इसकी length क्या है 1.5 is now happening in a length of 0.5 only. Yes, whatever was happening in a length of 3 is happening in a length of 1, right? 3 times 1/3 में रहेगा चीज़. So you can already see it here happening. So compression is happening. Whenever you need to plot these, now always plot, first draw the x-axis and mark the interval breakings. ये interval में कौन कौन से key point है? -1.5, 0 and 3. These are the points where you need to understand what's happening between them. बाकी फिर सारा 0 है, right? So yes, most of you I have got this. Time reversal. So time shifting, time scaling. Notice एक चीज इन तीन जो हमने अभी डिस्कस किया ना, one of them cannot achieve that. They are orthogonal, independent है वो. You cannot get time scaling by time shifting. नहीं हो सकती. The reason we are studying it, they are kind of like the atoms or the quarks of this signal operations. Yeah? वो further उनका uniqueness है उनके अंदर. हर एक अपनी role play करता है. Right. So what happens in time reversal? You replace इसका क्या होगा? Formula क्या होगा? by the way? कुछ बात है? अच्छा लिखा हुआ. माइनस कर देते हैं. ठीक. You just replace t by minus t. Yeah. So you get कैसे हो जाता है ये along x axis, ये y axis है इसके लिए flip हो जाता है, right? But it's the x axis whose values have become negative. Okay, where it was 1, whatever was happening at t1 is now happening at t minus 1. What was happening at t5 is now going to happen at t minus 5. So जो time t पे होना था अब वो time minus t पे. Yeah. So let's see. You can again check it from that method that we do, and you will find that the shifted one, the reflected one or the flipped one will follow this formula. Like rough वो idea है, but it's very clear mathematically also. Okay, our good friend here, जल्दी से plot करें, formula लिखे जल्दी. अब तो speed बढ़ जानी चाहिए. सर ये एग्जाम Again, में it's ज़्यादा not a प्लॉट creative drawing class नहीं है. सर ये वो एग्जाम में ज़्यादा प्लॉटिंग तो नहीं करनी होती. थोड़ी बहुत होती है. But I can tell you this, even in problems which don't ask you explicitly to plot, if you do the plotting, you help yourself. बहुत सी चीज़ें plot में नज़र आ जाता है जवाब इसका. Then you cannot go wrong mathematically. If you are, you will say me plot, so I'm very sure the plot is right. And plot says रफ ही ड्रॉ करना है, ज़ाहिर है. आई एम नॉट आस्किंग फॉर एग्जैक्ट वैल्यूज. पहले राइट द इक्वेशन. चलो थोड़ा पीछे ले लो. पीछे क्या ट्रक है पीछे ले. क्या करना? फॉर्मूला देखना. नहीं सर वो कर्व का स्टाइल देखना है. e raised to power ओह minus अच्छा यार, अभी तक समझ नहीं आया. ये हो गया. हो गया. आप लोगों को एक्सपोनेंशियल डिके और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आती है? सर बहुत पहले पढ़ी. नहीं कैसे अभी पढ़ लेना. ये ऐसे होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और ऐसे होता है सर एक्सपोनेंशियल इसमें भी डिके. वो होता है कितना कर कितना, कभी ज़्यादा कर दे तो तो कोई मसला नहीं, लीनियर ना करें, राइट? साहब जैसे पिछला ग्राफ ही exam ड्रॉ करना है आपने. हो गया. आपका यहाँ तक गया था मैं तुरंत वो तो जाहिर है आपकी टाइम के अब आएगा ना कि आप ये नहीं पता ना, अंदाजा नहीं होता. वो ठीक है, चलो उसको हम पहले रिवीजन e raised to power e by 2. सर हो हो गया. गया. हो गया. क्या हो गया इनको? अब इसको ऑपोजिट कर देंगे 1 से 5. फॉर्मूला क्या बना? बन गया. तो यहाँ क्या है? -2. Reversed, yeah. ठीक है. और क्या है ओरिजिनल प्लॉट क्या था?
लाइन ड्रा किया आपने, ठीक है। अच्छा ओरिजिनल कौन सा? 8+. आर्टिस्टिक माइंड मेरे ख्याल से होना चाहिए सर. ग्राफिकल माइंड क्या हुआ? वो क्या पूरा ग्राफिकल माइंड पे होगा, विजुलाइज करना. So firstly, of course, makes sense that you replace t by minus t everywhere, including in the interval definition. या फिर आप उसको simplify कर सकते हैं interval की definition को to get that. And there it is. So the original is here, and you flipped it and got the other one. Okay, so these were the basic operations that we wanted to discuss, but there are some others that you should already know. What does minus xt do? Let's say on the left, ये जो लिखा हुआ है ना xt, yeah, this is लेफ्ट xt. पर Let's x लगा दे. So can you draw and write तो equation for vertically minus flip xt? Okay, draw करें और उसकी equation भी लिखें. Let's say this is your xt, whatever it is. What happens with minus xt? Equation भी लिखें और plot. क्या होगा? vertically flip. ठीक है. That does not mess with the time scale. X axis को नहीं हो छेड़ता. किसको छेड़ता है? Y axis पे flip करता है. Now again, till the final, many of you will mix these two. मैं आपको पिछले साल के कुछ finals भी दिखा सकता हूँ. जल्दी में होता I है think तो it's lack of जल्दी में blunders तभी होते हैं जब practice करती है. प्रैक्टिस करना. I still have last year के मेरे पास finals हैं जिनमें people lost the whole, पूरा सवाल ही गलत हो गया. वो बस start ही उन्होंने इससे कर दिया. नहीं सर, अगर इस तरह हो जाए तो आप क्या कुछ दे देते हैं, दे देते हैं आगे. लेकिन then आप many problems you cannot go in the right direction. वो बेचारा फिर ये नहीं उससे बाकी फिर ठीक हो जाता है. बाकी अलग क्योंकि the rest of the logic sense नहीं बना रही होती फिर उनको समझ नहीं. वो कई तो लिख देते हैं कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, इंटेग्रल डज नॉट एग्जिस्ट. वो वाकई e to infinity आ जाता है, जबकि ओरिजिनल में वो e minus infinity की आना तो जीरो होता है. Right? Yeah, sorry, one. So right, so we call that, so that is the scaling, overall reversal of the amplitude, okay, or the value of the signal. Yeah, okay. What about, can somebody draw this one? अभी x2t का मतलब है, what was x2t? सर वो horizontally मैग्नी चल रहा है. ये y स्ट्रेच होगा. y So axis. x2t was compression, yes, but 2xt is what? Again, it will not mess with the x-axis. ये करेगा twice axis को करेगा. ठीक है, तो इसकी strength double हो जाएगी along y-axis. Yeah, or you can reduce it to 1/2. So please, those are very basic operations. You should know those also. But in terms of time, these are the operations. So quickly आपने draw करना है, ठीक है. इसका ये जो xt ऊपर है ना, minus x of minus t. इसी पर ड्रॉ करना. इंटेलिजेंस x नहीं होते, उन्होंने इसी तरह दिए होते हैं. ये कैसे दिया होता है, वो तीसरा पूछा. क्या कहते हैं नेगेटिव को माइनस टी को. हाँ, बिल्कुल ऐसे Noted or noted? जब वो माइनस मतलब नीचे बन तो फिर जाएगा. आप नीचे और इधर. हाँ मतलब नीचे बन जाएगा. जैसे क्वाड्रेटिक है ना, उसका आप प्राइम रिवर्सल करें ना तो वो सही है. पहले y देना कर देता है. हाँ जी, हो गया. इजी था. कहाँ गया डिजाइन तो. राइट डाउन. अच्छा, राइट ठीक है. बॉटम. So x minus t brought it to the right, yes, and then minus the minus outside flipped it. Yeah, so एक flipping इधर हुई है, फिर एक flipping उधर, right? Okay, good.
So now let's talk about some commonly occurring signals. Today we will do the ones in real valued ones. Next time we will look at complex valued ones. One of the earliest ones, most common ones, unit step. We have already discussed it a little bit. It's like very common in things where you suddenly apply a fixed input. Yeah. So switch is a very good example. The load here, before you turn the switch, the load is getting no source, no voltage. Yeah. So nothing there. But now you turn the switch or press that button and a input goes in. If that is a DC source, then you have done a step. If it's not a DC source, then of course you are giving it a sinusoidal input. Right? इसमें हम next time आएंगे sinusoidals. Let's stick to the simpler one first. That is this. So what happens at t equals 0? You give it some voltage Vk. For the simplest case, we draw it like a unit step. Why do we call the unit? A step does not have to be unit. In this case, the step is up to Vk, whatever voltage it is, right? But the basic form is unit. That means we say it goes up to 1. But typical. So ये transition 0 to 1 कोई line नहीं बनाते ना, क्योंकि वो less than है और वो equal to है. Right. I mentioned this before. Reality is never like this. Yeah. So in reality, आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा एक transient आएगा. That it is a simplification. Yeah, we go to that. जब वो time आएगा transients का, then we will do those. Yeah. Okay. So ये समझ आ गया equation और figure. Confusion to just a unit step. I've already mentioned when we looked at the vocabulary. It's when you give a sustained input to the system. There was a system. ये pen है, nothing happening to it, and then you give it a fixed push 8 Haas value का लेके जाना, right? That is a unit step or a step. Then the strength of that input, if it is one unit, whatever units you want to use, we call it unit step. Otherwise, it's scaled by that. So now some uses of the unit step. How can we limit a signal so it doesn't start before t equals 0? Like this one. Now, if you are to give a AC input, but the input did not exist before t less than 0, right? One way is to write this as a piecewise function, right? The other way is mathematically we do this. ये आपको नज़र आ रहा है? We want this, yeah? We want the signal to start at t equals 0. And it's very common requirement. We want to say कि जी system को कोई भी input नहीं मिल रहा था at a particular time, जिसको हम t0 कहते हैं. After that it starts. So if you don't have a way to do this, you will have a, let's say you gave it a cosine function input, yeah? But you want to start at t equal to 0. What do you do with the rest of it? The trick is that we use is multiply it with ut. The mathematical notation that we use helps us. How does this work? The thick blue is ut, yeah? What happens to anything of the original function before t less than 0? It's multiplied by what? 0. So it's removed. Yeah. The rest is multiplied by 1. Unit step if you give. So you didn't change anything. Whatever scale it had, it will have it, right? So this will automatically lead to this thing, which is now a piecewise. So you can rewrite piecewise functions with the help of unit step. Becomes more elegant also. Yeah. So the piecewise function now, if you want to write e minus at t greater than 0 or t less than 0, e minus at times ut. Yeah. These two will lead to exactly the same formulation, same plot. Yeah. So it's just a trick we use, and you will use this in your problems. You will see. Right, time shifting a unit step. अभी पढ़ा था ना हमने time shift. Yes.
So there is no need for a unit step to start at t equal to 0. There could be situations where you want it to start at 10 milliseconds or whatever units you want to use. Yeah. So in that case you can try, you can see. Okay, so if you have ut minus t, कोई प्लॉट कर सकता है इनको जल्दी से? क्या होगा जो शिफ्टेड वाला है? ये जो नीचे है ये क्या है? इज इट शिफ्टेड लेफ्ट और राइट? राइट. Okay, if t is greater than 0, वरना ये left shift हो जाएगी. Okay, so shifted to the right by capital T units. Yeah. So कैसा लगेगा ये? Like this. You shifted the unit step to the right. Okay. Now I want you to quickly draw a compressed version of ut. So if you have ut unit step, what does u2t look like? Let me say plot for example. So now we are combining the operations we learned with the new signals that we are learning. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चलो एक बार. कोई फर्क नहीं. Sure. ये तो सोचने तो लग जाएगा. वहाँ टी कोई टर्म ही नहीं है. वहाँ 2 ले आओ 0 है 0 डिवाइड बाय 2 0 ही होता है. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, so I don't think we have it here, but yes, it doesn't change. Okay, you can check. Could be no. So, कैसे? नहीं समझा. Right. So, ये कह रहे हैं इनको बताना पड़ेगा. So, what is ut? U of t is 1 for t greater or equal to 0, right? And 0 for t less than 0. Replace t by 2t. So you get 2t. यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता. 2t. I can resolve this to say it is t greater or equal to 0. T आ गया से? ठीक है, जल्दी हो गई. Yeah. So some signals or yeah. Data can be invariant to operations. So उसको भी फर्क नहीं पड़ता. Okay. But time shifting did it. Okay. So can somebody quickly plot minus ut minus 3? राइट साइड पे जाएगा फिर नीचे वर्टिकल आएगा. राइट साइड में -3 कर सकते हैं. Right. So it goes to the right by 3 units and then flip हो जाएगा. ठीक है. Now this is interesting. You can generate rectangular pulses with step also. Okay. So notice this rectangular pulse. You could write it piecewise. Fine. 3 pieces बनेंगे, or actually just one piece. You can say x t2 to 4 is 1 and 0 otherwise. Yeah, that's fine. But notice the equation that the unit step gave you. It often comes in handy to create steps and pulses and many other shapes with the help of unit step. ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि when we actually work with problems, try to solve them, this kind of expressions show up often. Okay, and if you are able to quickly connect them to the shape, अब इधर से आप ये बना सकते हैं. जल्दी से जरा आप बनाएं. कैसे होगा ये? From here, how did we get here? So basically एक किस्सा देख लेना कि पहला स्टेप दूसरा स्टेप में पहले स्टेप से -4 है. सॉरी. Okay, ड्रॉ करें ना. 2 steps ड्रॉ करें और फिर करके दिखाएंगे. It's part of practice. Yeah. If you get comfortable with this, it will help you out. So, of course, you could say I will just put different values of t here and t there. वो नहीं कह रहा. You have to draw 2 of these. First, draw this guy. Yes. Then draw this guy, and subtract them. Or a better way often is to draw this guy and draw this whole thing with minus, and add them. Right?
वो बेहतर होता है, जो थोड़ा ईजियर होता है। पर यू डिसाइड क्या है, जल्दी से करा। पहला वाला क्या है, t minus 2, so what happens, 2 times right side. 2 steps, तो क्या आगे right हो गया। अच्छा ये पहला, इसके नीचे दूसरा ड्रॉ कर लें, वो क्या है, it's up to you, you want to do minus ut minus 4 or just ut minus 4, so maybe equals to ut minus 4, वो कहाँ जाएगा, कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स राइट पे चला जाएगा, ठीक है। नीचे अगर if you want to use the minus, yeah, now add these two, जो आपने दो ड्रॉ किए ना, इनको पॉइंट वाइज ऐड कीजिए, right? हाँ ऐसे ये और ये पॉइंट क्या है, 4 है, राइट। पहला वाला कहाँ है, जीरो कहाँ है, ब्लॉक बनेगा ऐसे बनेगा, जीरो से हाँ इन दोनों Zero सिग्नल से की दूसरा डिफरेंस नीचे जाएगा, इन दोनों एक सिग्नल ये है ये 4, नीचे जाएगा। so this what you have drawn is minus ut minus 4, right? अब ut minus 2 पहली टर्म ऐसा ये है ut minus 4, अब इनको पॉइंट वाइज ऐड करते हैं, तो आपने जैसे आपने 0 से 2 तक क्या है, 0 है, 2 to 4 क्या है, इस तरह जाएगा, 2 to 4 1 plus कितना जाएगा, 4 से ऑनवर्ड दोनों इसको कैंसिल करना शुरू करते हैं, you get a pulse from 2 इसी to तरह वो 4, फोर सिग्नल का नीचे आप दोनों को ऐड करो कि जहाँ पे ये बता था 1 minus 0 हो जाता है, हो गया। अच्छा क्या बनेगा? अगेन ये ऐसे करके आई एम ऐसे एम्फसाइजिंग दिस, प्लीज खुद से करें, ये डोंट कीप योरसेल्फ कि हाँ जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये क्या ड्रॉ करेंगे, आ रहा है आपको, you got it, all of you, so you can generate these pulses with unit step, and this is like on off, right? You turn on the input and then turn it off after a while, yeah? On off, yeah? So that is fine, and you can check it in different ways. Our old friend, we have already discussed it, so I'll just summarize it here. Unit impulse function, again, it's a, in the, these all I am writing in the continuous time. So discrete time I'll write them later, they are analogous. So here, it is defined by its two properties, which is that it at not t not 0, it is 0, yeah. Secondly, its area has to be 1, whatever function specifies that is this thing. So time shifted delta t minus t, if you shift it by, now you see that the impulse doesn't have to be at t equal to 0, you can also time shift it. सर ये तो एक पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही होती है ये वन डिफाइंड होती है, उसकी जो वैल्यू वाई एक्सिस में डिफाइंड वो डिफाइन नहीं होती है, होती है। अगर वो डिफाइन हम कर दें तो वो फिर वो एक सिंगल सैंपल पॉइंट बनेगा, राइट। So that's why I say this function is not defined by its values, it's defined by its two properties, yeah? और इसीलिए you can prove that this triangle की जगह rectangle के triangle will also satisfy, वो भी आप करा सकते हैं, सर कर्व से भी आप करा सकते हैं, quadratic से भी। So since we are only interested in the properties, we just draw the arrow, yeah? In discrete case it's very simple, it's a unit sample, okay, at t equals 0, n equals 0. So we'll come back to that. Okay, so this is delta t equals t. Again, it is unit impulse because we are basically not scaling it with anything. This one is very important. One of the most important properties of the unit impulse, or actually the reason for its definition, that is over here. Let's say you have a general function phi t. नज़र आ रहा है blue में? That's any function. I have drawn one, so it can be any phi t.
what happens when you multiply phi t with delta t minus t? Okay. Now delta t minus t you've already seen is just a shifted delta, right? Both are. Assuming t is positive, otherwise you go to the left. So what happens when you multiply a delta t minus t with phi t? You are replacing it with this value. What is that value? Phi t times delta t minus t. ये right side पे क्या है? What is the function on the right side? लेफ्ट पे तो दो फंक्शन है, phi t and delta t minus t. राइट पे is it a product of two functions or is it just one function? प्रोडक्ट ही होता है। Phi capital T is it a function or a value? Constant value होगी ना? Yes. So what is the function on the right? It's a delta function, and two operations have happened to that delta function. It's shifted in time, like before. Yes, t minus t पे, and it has been scaled. पहले हम unit impulse कह रहे थे. Now its value is scaling is what? Phi capital T. Yeah. So what happens is when you multiply this guy phi t, any function, by delta t minus t, what delta t does is it converts it into an impulse function whose scale is the value of the original function at this time. ठीक है, ये इधर से आपको ग्राफिकली नजर आ रही है. दिस इज द वैल्यू at time t, right? So on the right side you get an impulse. This is an impulse. ये पूरी एक impulse है because this is not a function. It's a constant now, a fixed value at capital T. This impulse is shifted to the right by t units. Here it is, and it is scaled now. यहाँ पे ये this was unit impulse, yeah, when you multiply. Now it is scaled by phi t. So the rest of the values कहाँ गई इस function की? बाकी values कहाँ गई? उनके साथ क्या हुआ? एक value उठा ली ना आपने, phi capital T. Yes. What happened to the rest of the values? Zero से multiply. Because delta function is 0 at t not equal to 0. Right? Notice when we say delta t equals 0 at t not equals 0, what are we saying about delta t minus t? क्या होगा इसका फॉर्मूला? दूसरा मार्कर का. If delta t equals 0 at t not equals 0. Now what is the formula for this thing? Delta t minus t equals 0 at t minus t not equal to 0, meaning it is 0 at t not equal to t. Right? जिस लेट से हम डेल्टा में कहते हैं ना कि जब जीरो नहीं होता t तो उस वक्त जीरो होता है. इसके अलावा बेसिकली हम डिफाइन नहीं करते कि जीरो पर क्या वैल्यू है. Yes, so we are not defining here also. तो What we are saying is when you replace t by t minus t, then this has also to be replaced, right? So this is what causes the shift in the delta. Yeah? Now, if delta t is 0 at t not equal to 0, you can get a function of delta which is shifted, t minus t. So this now whole thing is t. ऐसा ही है ना? So then it's t not equal to. That's what's happening here. At it only exists at t equals t. It is non-zero at t equals t. All other values it is 0. Okay. Now this is what it does. कैसे दिखाएंगे? लंबा हो गया ना. Yes, yes. या So मैथमेटिकली तो नजर नहीं आता. we normally put 1 here for unit impulse, and then we put phi t or whatever level it takes, 1, 2, 2, 3, whatever it takes. So it's like delta t is unit step
alpha delta t is scaled by alpha. Yeah, whatever you want here. 2 रख लें, 3 रख लें, or some general value. So now if I wanted to pick one of the values of this function phi t at, let's say, t equals whatever t is here, but let's say t plus 1, what should I do? So I don't want this value. Yeah, I want a value here to the right, this value. Let's say this capital T for convenience is 3 and I want a value at 4. T minus 4 Okay, so you will just shift your delta to T minus 4. ठीक है, ठीक है. Right, so let's see. Now next step is even more interesting. Yeah, what happens if you integrate both sides? करके देखें जरा. Integrate both sides with t over t. Okay, integrate minus infinity to infinity both of these sides. Let's try to. Yeah. So you need to take integral minus infinity to infinity. If I write the right side, 5t delta t minus t dt. Place your right hand side to more easier. Because they are equal, so whatever integral you get on the right will be applying to the left also. Yeah? So क्या बना? कैसे करेंगे? स्टार्ट कैसे करेंगे? Confusion से. Right hand side to करना easier. So इसको integrate by parts में होगा. सर एक सवाल, इम्पल्स की इंटीग्रेशन 0 होती है? इम्पल्स की दो प्रॉपर्टीज हैं. दूसरी क्या? याद नहीं आ रही. 1 होती है. Minus infinity to infinity delta t dt equals 1. 1 आएगा. सर फॉर्मूला इसको सॉल्व तो करें. तो नहीं. Let's do the right hand side. बल्कि नहीं. Minus infinity to infinity. 1 into t आएगा. अच्छा, जो बाय पार्ट्स को क्या रहा था? मैं आप क्या रहे? क्यों? तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो गए. अच्छा, आप राइट हैंड साइड को शुरू कर लेंगे. तब भी बाय पार्ट्स नहीं. तब तो सिर्फ दो फंक्शंस दो function ऐसा हैं. नहीं, एक कांस्टेंट. सही सही से. एक तो कहाँ से आंसर तो बाय निकालना हाँ, तो है. answer कांस्टेंट सिर्फ तो सबसे 5t आसान होता है. चीज होती है. 5t इंटीग्रल में कांस्टेंट फिर ये देंगे. जीरो नहीं आएगा ना. 1 into t. 5 कैपिटल T. 1 into 5 जो into आप ठीक है. क्या? ठीक है. हाँ ये सही है. लेकिन कैसे आएगा ये? सर एक प्रॉपर्टी हमें पता है, वो इंटीग्रल 1 हो जाएगा. लेकिन हमें ये पता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी इज 1. आर यू गेटिंग दैट? सर क्या फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टी तो वही रहेगी. आर यू श्योर? नहीं सर देखें ना, वो So, कांस्टेंट है. माइनस ओके, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा 2t dt, इसमें क्या वो भी 1 आएगा? सर वो आपने वो एप्सिलॉन वाली जो एग्जांपल दी थी, उसमें हाँ. आप जितना वो बड़ा करते रहते हैं उतना आप एक्सेस छोटा करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, 1 ही आएगा. डेल्टा 2t में 2 है. ये टूल के आप बाहर भी निकाल सकते हैं. 2 to power ला सकते हैं. चलो इसको तो ट्राई करते हैं. But it's not straightforward. You got the right answer for one case. Yeah, delta t minus t is 1. So let's look at it. Firstly, the by parts idea doesn't apply here because this is a constant. Let's take it out. Second, you get minus infinity to infinity delta t minus t. Right? dt.
Now we know only two properties of delta function by which it is defined. That is delta t equals 0 for t not equal to 0 and minus infinity to infinity delta t dt equals 1. The problem we have now is that it here, this part is not exactly this thing. Yes? So how do you prove it then that this is also 1? और क्या इंटीग्रेशन की क्या ट्रिक सीखेगा जैसे बाय पार्ट्स होता है ना, इसका और भी ट्रिक्स हैं. सब्स्टिट्यूशन का सीखा यस so try substitution. Delta Go t for minus delta capital T. yeah, let's say we say tau equals t minus t. Yes, then what's delta tau? dt हाँ हो जाएगा ना, ये तो कांस्टेंट है. dt what happens to the limits as t is minus infinity? What is tau? Still minus infinity. If t is infinity, what is tau? Still infinity. So limits don't change, this guy doesn't change, so we are easily able to replace this whole thing by minus infinity to infinity delta tau d tau. Dummy variable होता है ना ये variable, tau. This whole thing can be replaced by this, but this now satisfies that thing, so you can replace it by 1. Now I want you to find me this thing, minus infinity to infinity delta 2t d. Still one. अब इसीलिए मैंने दिया 1. कैसे नहीं है सर? करें ना सब्स्टिट्यूशन सोचना नहीं है, ग्रीक फिलॉसफी नहीं, रोमन लगा दी एक्शन. ओके, दिस इज द ग्रीक्स, यू नो, बैठ के हर चीज़ के बारे में सोचते रहते. ठीक है, फिर रोमन्स आए, उन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया और कहा कि आप इसके बारे में सोचो. हर चीज़ के बारे में सोचते आर्मचेयर फिलॉसफर्स होते थे. वो टाइम था, जरूरत थी उसमें. वो स्टैचूज में भी सोच रही है तुम बात कर रहे क्या होगा? हो. सो हो गया, ये सॉल्व हो गया. डेल्टा 2t 2 होता है 2 कैसे किया? Substitution. Yeah. So you try substitution. Why? Because you are stuck here. You needed this thing, but you have a different form. Yeah. So you replace. You say tau equals 2t, but then d tau is no longer dt. It's 2 dt. Then dt has to be replaced by 1 over 2 d tau. So 2 आता है, 1 over 2. गलत हो गया ना. शॉर्टकट था हमारा, जो है ना, पूरा किया. Right? Now notice you want to replace 2t by tau. Yes? So you will replace dt by 1 over 2. Yes? What happens to the limits? कुछ नहीं होता. If it was infinite, this is infinite. This was minus infinity, this is still minus. So the limits are as they are, minus infinity to infinity delta tau, but dt is 1 by 2 d tau. So 1 by 2 comes here, d tau. Now this guy we know is 1, so answer is 1 by 2. Almost हो गया था. ठीक है. So I wanted to show you this because it's not directly कि आप इसको देख के कहिए कि 1 आ. Okay, operations can change the thing. Okay, I want this one, minus infinity to minus 1 delta t dt. Solve करें जल्दी से. मैं चाहूँ कि आपको बस फंक्शन का सारा कुछ आज ही समझ आ जाए.
अल्लाह खैर जी क्वेश्चन नजर आ रहा माइनस इन्फिनिटी टू minus 1 minus 1 ये again we go into the Greek mode. You Greek one. Yes, then the meat will come as the Romans. Somehow बर्बाद कर दिया. Solve Great Roman थे हमारे. Great हमारे एक लेवल कौन सी property? सर इसमें कोई लिमिट्स खींचने का कोई तरीका होता है? Everything you need, really. सब कुछ है. वैसे तो मेरे दिमाग में जीरो आ रहा है. जीरो आ रहा है आपके दिमाग में? मतलब जीरो यानी नहीं आ रहा जवाब? जीरो आ रहा है लेकिन मुझे वो मेरी लॉजिक से आ रहा है. क्या कैलकुलेशन बताए लॉजिक लॉजिक से ही आना है ये. जीरो पर ही आता है. उससे पहले तो जीरो ही होता है. Exactly. यही कर सकते हो. क्या कर सकते हो? The delta function before zero and after zero क्या होता है? Zero होता है. The area, the integral is between minus 1 to minus infinity. जिधर उस बेचारे ने अकर होना था वो तो इंटेग्रल में डाले ही नहीं हमने. Okay. इस केस में Greeks काम आ. So, but you know the Romans is also working. If you draw it ना, अगर आप draw कर लेते हैं तो आपको भी नजर आ जाता है. देखिए, this is delta t at t equals 0, right? If you draw, you will realize that you're looking for an area here, minus 1 to here. Yes, you will realize कि ये तो अभी अकर हुआ ही नहीं. Yes. So how do we get to that? So let me see quickly because we will finish the delta function. If we have anything is left. So I just want to mention here that this is called the sampling property of the delta function. Notice that you can use the delta function to get a sample of any sample of a function. Okay? कैसे करेंगे सैंपल उसका कैसे निकालेंगे? If you want the sample at time t, you have a function, let's say phi t. Yeah, you want the sample at phi 3. Let's say t is equal to 3. You want to get that. What you can do is multiply your function by delta t minus 3 and integrate over the whole range, and you will get. So this will come in very handy later. Okay? Delta functions help us sample the processes. Okay. So you have to integrate it. क्या है? इंटीग्रेट अगर आप करो तो वो तो फिर 1 नहीं आ जाएगा. आपको जो लेट्स से वैल्यू चाहिए वो तो नहीं आएगा. किसकी बात कर रहे हैं? इसकी? इसके ये तो किया ना हमने, वो आ गई है ना phi t. If you don't integrate, then you get a function, right? That function is an impulse which has height same as phi capital T. Yeah, and it tells you the location. But if you know the location already, you can just integrate and get phi, whatever you want to get. Yeah. One thing we won't prove it, but there is a relation between these two guys, by the way. Yeah. dut by dt is delta t. Okay. So one is the derivative of the other. और फिर वो दूसरा उसका इंटेग्रल बन जाता है. Yeah. So I give you just one example here. We want to ask you to solve it. Show that t cube plus 3 delta t equals 3 delta t. Okay. Very easy to show. What you will do is you will use this result. Phi t delta t minus t is same as phi t delta t. What's phi t in this case? T cube plus 3. Yes. So capital T in your case is 0 because there is nothing here, which means you just need to replace capital T by 0, yes, and phi t by this thing. So if you do that, you are left with हो गया? अभी जल्दी से हो गया.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी विल सी लेटर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अटेंडेंस छोड़ दें. प्लीज सर. रिकॉर्डिंग लीक हो जाएगी बाद में. अकॉर्डिंगली